morning to all of you. Hope you all are fine and fit at your home. I am receiving your video of reading. You are doing very well. Keep it up. Most of the students speak the sounds while reading. You should speak the sounds while reading. It will help you in learning the words. Today we will start our English class. And what is the topic? Phonetic sound of A. So today we will learn some new words. Okay, today we will learn with the words ending sound ए, ग, एग. आज हम कौन सी साउंड लेंगे? एंडिंग साउंड है ए, ग, एग. So let's see the words with ending sound of e, g, egg. This is your bag. This is your school bag. You all like your school bag. You keep your books, notebooks, lunch box in your bag. Let's read the word bag. B, e, g, bag. B, e, g, bag. This is S, e, g, sack. You all seen these are the clothes. These clothes hang on the rod. जब कोई भी चीज हम ऊपर से नीचे हैंग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स, ए, गा, सैक. आप देखते हो घर में आपकी मम्मा भी कपड़े वॉश करती हैं तो ऐसे ही हैंग करती हैं, और घर में मम्मा अलमीरा में भी क्लोथ्स को हैंगर पे हैंग करती हैं. तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? स, ए, ग, सैक. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज tag. T, A, G, tag. When you buy some new clothes, have you seen the tag? उसके ऊपर एक tag होता है. उस tag पे क्या लिखा होता है? The price of the cloth and size of the clothes are mentioned on the T-A-G tag. T-A-G tag. अब जब आपकी मम्मा आपके लिए कोई न्यू चीज लेके आएंगी ना, you should check the T-A-G tag. Okay, this is dog. Yes, this is dog, but its tail is moving up and down, side to side. When anything moves up and down or side to side, so we will call it वह एगा वैग. जब कोई चीज ऊपर से नीचे साइड पे मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वह एगा वैग. तो इसकी एंडिंग साउंड क्या है? ए, ग, एग. Okay, this tortoise wins the race. Have you heard the story of rabbit and tortoise? Tortoise slowly wins the race. When you slowly win anything, it's called lag. 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 The ending sound is ag. Let's revise the words. B, e, g, bag. S, e, g, sack. T, e, g, tag. वह. W के लिए क्या साउंड आती है? वह ए, ग, वैग. Let's start the work in your English notebook. First you will write the date. 24th September 2020 and write down the CW, and we will write the sound of egg. Egg. आज हम कौन से words लिखेंगे with the ending sound of egg, egg? So let's start. B, e, g, bag. You should speak the sound with ma'am. B, e, g, bag. T, e, g, tag. L, e, g, lag. S, e, g, sag. R, e, g, rag. E, g, egg. B, e, g, bag. T, e, g, tag. L, e, g, lag. S, e, g, sag. R, e, g, rag. And last word is वह ए ग वैग. वह ए ग वैग. Okay kids,
Revise this. Ega egg, ega bag, ega tag, ega lag, ega sack, ega rack, ega bag. You will write these words in your English notebook. You should write it 2 times. आप इसको कितनी बार लिखोगे? 2 times लिखोगे. So that you will easily learn the words. आप जब 1 time, 2 time बार बार उसको रीड करते हो और बोलते हो और अपनी नोटबुक में लिखते हो तो फिर आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाते हैं. But one thing always remember, you should speak the sound. बहुत सारे बच्चे साउंड बोल रहे हैं लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ कुछ बच्चे साउंड्स नहीं बोल के लिखते. You should always speak the sound while reading and writing. We will meet you again. Bye.